जब भी जीवन में बहुत बड़ी नहीं छोटी सी भी बात होती है ना, तो हमारा ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? Even if somebody doesn't behave with me the way I expected them to be, even then I say, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? करते हैं कि नहीं करते? इवन अगर आज मौसम वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं, तो हम कहते हैं आज ऐसा क्यों है? होता है कि नहीं? हाँ? तो ये जो ऐसा क्यों है is generally a part of our life whenever there is any scene or anyone's behavior which is not the way I was expecting it to be. होता है कि नहीं होता? कई बार आज छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे 15-20 साल के बच्चे कहते हैं, मैंने इतनी अच्छी पोस्ट डाली कल शाम को फेसबुक पे, क्यों मेरे फ्रेंड्स ने उसको लाइक नहीं किया? तो तुम क्यों दोस्त पे भी करते हैं? तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ इज नॉट रियली, जब हमारे को ऐसी छोटी सी या बड़ी सी बात आ जाती है, लेकिन ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बना हुआ है, क्योंकि हम सब चाहते हैं और हम सब अपने जीवन के लिए एक सुंदर सी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जीवन ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अपने लिए भी लिखते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी लिखते हैं, अपने बच्चों के लिए लिखते हैं। How many of you feel that life goes according to the script you write for it? And which does not mean कि कोई डिफिकल्ट सीन्स ही आते हैं। कई बार इतनी सुंदर सीन आती है जो आपने अपने स्क्रिप्ट में कभी लिखी ही नहीं थी। होता है या नहीं होता? है ना? तो हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशन of how we want life to be for ourselves, for our family, especially for our children. सब कुछ चल रहा होता है ठीक, ऑलमोस्ट वैसा जैसे हमें चाहिए था, और कभी कभी अचानक एक सीन आ जाती है एंड कई बार तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही बदल जाता है। अब जब वो सीन आती है तो हमें उस सीन को फेस करना, क्रॉस करना, आगे निकल के जाना। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, why did this happen to me? And we're not talking cancer, okay? We're just talking life. When I say to myself, why did this happen to me? Just think कि ये प्रश्न, question, a questioning mind and a questioning intellect, जो ऐसा बोलता ही जाता है अंदर ये मन, तो ये हमारी एनर्जी को क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों हुआ? मैंने किसी के साथ कभी भी गलत नहीं किया, मैंने किसी को कभी दुख नहीं दिया, मैंने सबके साथ अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, मैंने तो सबकी मदद भी की, मैंने तो सेवा भी। ये तो मन बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? So when I am saying these questions inside, what is it doing to my energy? What do you think it's doing to my energy? It's depleting. Sure? Yes. And ये क्वेश्चन का आंसर अगर मिल भी जाए मुझे कि ये क्यों हुआ, that answer has nothing to do with the solution. Right? अभी ये टेबल है, कांच की टेबल है, अगर ये अभी टूट जाए तो क्या हम वहां खड़े होकर ये सोचेंगे टेबल टूटी क्यों, तोड़ी किसने, गलती किसकी थी? If we are doing that, then every moment, time and every thought, energy we are wasting, because उतनी देर में हमें ये देखना चाहिए था किसी को चोट तो नहीं लगेगी, किसी को उठाना है क्या, लेकिन क्यों टूटी, किसकी वजह से टूटी, किस पर मैं उंगली रखूं ये कहने के लिए कि ये जिम्मेवार है मेरे जीवन की प्रॉब्लम के लिए। This is only a waste of energy and waste of time. And also क्योंकि अगर इसका आंसर मिल भी जाए, the answer to why it happened to me has no role in the solution. तो अच्छा ना होगा कि उस क्वेश्चन को, अपने मन को, treat your mind like somebody sitting next to you. और वो जो साथ वाला बैठा है ना, वो हर 2 मिनट के बाद बोलता है ऐसा क्यों हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे उसको? सपोज आपके साथ वाला जो बैठा वो बोले ये टेबल टूटे क्यों, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? क्या उसको छोड़ दो ना, टूट गए। फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो 5 मिनट के बाद बोलता है फिर भी किसने रखे थे ऐसे गलत जो ये टूटी? मिलते हैं ना कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? So treat your mind like वो ऐसा वाला जो कुर्सी की साइड पे बैठा हुआ है, लेकिन now take ownership कि जब ये साथ वाला ऐसा बोलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, हमें उसको तुरंत क्या बोलना है? हमें तुरंत उसको क्या बोलना है? Don't allow that person to keep on talking that conversation, क्योंकि अगर उसको बोलने दिया तो वो तो बोलता ही जाएगा। तो हमें उसको क्या करना होगा? Just look at that person and say, does it really matter? क्यों हुआ? Important क्या है? Important क्या है? अब क्या करना है? इम्पोर्टेंट क्या है, अब क्या करना। वो 5 मिनट के बाद फिर बोलेगा, वो 5 दिन के बाद फिर बोलेगा, 4 दिन बाद फिर बोलेगा, लेकिन धीरे 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 वो अपना रोना बंद कर देगा। लेकिन अगर हम उसको आंसर नहीं करेंगे तो वो क्या करता रहेगा? वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। हमें किसी और से काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। There is one person who can counsel us very very well. कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? यहाँ। सिर्फ हमें क्या करना है? अपने मन की बातों को एक दूसरा ऐसा समझकर उसके साथ बातें करते जाओ कि जैसे ही अंदर से एक थॉट देगा आप इसको आंसर करो, जैसे ही फिर बोलेगा आप इसको आंसर करो। क्योंकि अगर हम इसको आंसर नहीं करते तो इसको रोने की आजकल थोड़ी सी आदत पड़ गई है। ये तो छोटी छोटी बातों पे ही रोता रहता है आजकल, नहीं रोता, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाता है। Yesterday I was at a program and I said, what's the cause of hurt? So one lady said, somebody didn't smile at me today. उतना ही चाहिए दुखी होने के लिए अभी, उतना ही चाहिए इस टाइम लोगों को दुखी होने के लिए, एंड उस दुख को बड़ा लंबा पकड़कर चलने के लिए कि why did they not smile at me? क्यों ऐसा हो रहा होगा कि हम छोटी छोटी बातों पे दुखी हो रहे होंगे? क्या रीजन होगा? क्या रीजन होगा? क्या रीजन होगा कि छोटी छोटी बात हमें जल्दी तंग करती है? एंड फिर एक तो हो जाता है दुखी हो जाते हैं और दूसरे उसके बाद कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाले हैं। Which means one, I first create hurt, and second, I have no plans of healing it because ये दुख किसने दिया? उन्होंने। ठीक भी कौन दे करेगा? वो। This feeling of a victim, बेचारी मैं, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बेचारी मैं, दुनिया is unfair to me. This feeling of victimization, कि people are not nice to me, the world is being unfair to me, allows my mind to keep living in pain and blaming the world for my pain. And then waiting for the world to change so that I can be happy. Have you ever put your finger on someone and said, they hurt me? Has anyone hurt you ever? Has anyone ever hurt you? नाम याद आ रहे हैं कोई? नाम याद आ रहे हैं? वो यहाँ है, यहाँ से वो बहुत कुछ कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, फिजिकली मार भी सकते हैं। That's how much power a person has to financially exploit me, to physically hit me, to cheat me, to betray me, to lie to me. But यहाँ कौन घुस सकता है? यहाँ कौन घुस सकता है? यहाँ कौन घुस सकता है? कोई नहीं। हर्ट कहाँ होता है? हर्ट कहाँ होता है? यहाँ होता है। कैसे होता है? जब उन्होंने जो किया वो किया, उसको देखकर मैंने क्या क्या सोचा। So depending on how I think in response to how people are to me,
decides how much hurt I will create, and second decides for how long I want to be in pain. So who hurts me? Who hurts me? Don't you think that makes the list a little short? वो इतने सारे नाम हट जाते हैं लिस्ट से और एक ही नाम आ जाता है कि किसने यहाँ पे चोट दी, उन्होंने वहाँ किया। बात सही कि उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन बाहर ही किया। यहाँ की चोट किस पर डिपेंडेंट थी? The way I speak to myself. We think we will be happy when the world speaks nicely or behaves nicely to us. That's not the truth. आपको पता है कभी अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छे से बिहेव करे ना, तो आपका मन अंदर से कहता है क्या चाहिए इनको आज मेरे से, इतना अच्छे से बातें कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता कभी? Which means even if people are in their perfect behavior to me, if I want, my mind can create a wrong thought. Yes or no? पक्का पक्का कि अगर लोग बहुत अच्छे से भी मेरे से बिहेव करें, आई एम एबल टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट। तो अगर लोग बहुत बुरी से भी बिहेव करें, कैन आई नॉट क्रिएट अ राइट थॉट? Yes or no? Yes. Why? Because what I create here has nothing to do with what they do outside. And when I start living my life with this understanding and with this realization and with this awareness that people, situations, the world, which can involve my family, my children, and everybody around me, they are outside. Rest is everything in my control. Then my self-sympathy, victimization, blame game, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। And क्या आ जाता है? Personal responsibility that I create what I create. I have a choice for how long to be in pain, and I have a choice when to heal myself. It all depends on me. Easy? No? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? अच्छा लेकर आओ उनको सामने. The name. They hurt me. Fill in the blank. Bring them on the screen of your mind right now and see what they did that day. So let's rewind the scene. It could be something very recent. Don't even need to look at any big things in life. Choti choti. What they did. Divya, can everybody see what they did that day? Yes? Now look at how I have been thinking about what they did. What they did is long over, but my inner conversation is still going on. So who's creating the damage? Who's creating the damage? Who's creating the damage? Myself, not they. And I don't need to wait for them to change, because if I wait for them to change to be happy, it may happen soon, but it may also never happen. Why? Because they might not intend to change. And why would they not intend to change? Because according to them, they have not done anything wrong. In fact, it could be according to them, we are the ones who are. तो चीज़ें बड़ी complicated हो जाती हैं बिना बात के. When I start living my life with this awareness that I am creating everything that I'm creating here, then the small scenes of my life, I learn to conserve energy. I start conserving energy. How many of you take care about conserving water? Conserving electricity? Conserving energy? अब आज से करेंगे. जैसे ये ऐसे ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. विजुअलाइज इट लाइक दैट वाटर बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है. क्या करना? क्या करना? I have to create a very strong and powerful thought, which means talk very assertively to my mind so that it stops growing. With understanding कि okay, they did what they did, but I do not have more time now to think about their behavior, waste my happiness, and affect my health. Why this happened to me?
should not be thought about. But most important is, what can I do from today so that not just cancer never happens to me, but just a low feeling also never comes to me again in my life, and I'm happy always. That's very important. तब जब जीवन की छोटी छोटी चीजों में ताकत बचाना शुरू कर देंगे, तो अगर जीवन में थोड़ी सी बड़ी सीन आ जाती है, हमारे पास बहुत ताकत है. अब here we are, a room full of very very powerful souls, जिन्होंने जीवन की एक बड़ी सीन में बहुत पावर लाई है. लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि हम छोटी छोटी सीन में अपसेट नहीं होंगे, बिकॉज समटाइम्स हम बड़ी सीन में बहुत पावरफुल होते हैं कि हाँ कैंसर आई कैन फाइट इट बिकॉज वी हैव सो मच पावर, आई कैन फाइट इट. लेकिन इफ माई हस्बैंड डिड नॉट टॉक नाइसली, तब रोना तो बनता ही है. ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा. कैंसर वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खत्म हो गया. That is no problem. So what we need to realize is कि when the soul has so much power कि मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज को ऐसे क्रॉस कर लेती हूँ, तो why am I wasting my power इतनी छोटी 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 चीजों में? क्योंकि बड़ी बड़ी सीन्स लाइफ में बहुत कम आती हैं, लेकिन छोटी छोटी सीन्स every day and many times. And the way I respond to small, insignificant scenes of my life as a repeated pattern throughout the day decides the way this works. The way this works. Like one of the questions which says, why did cancer happen to me? Was it any of my past karma? What is a karma? A karma is my every thought, my every word, my every action. Karma does not mean I have done something wrong and that's why something wrong has happened to me. Is not karma. It's not. Someone somewhere, maybe not in this lifetime, maybe in another lifetime, because it's the journey of the soul. I'm just changing costumes. Someone somewhere betrayed me, ruined my life. I didn't do anything wrong. Someone else did it. But all that I did was, I held on to that pain. अंदर मैं रोती रही. I held on to that resentment which said, I cannot forgive them. What they have done, I cannot forgive. Now I don't know when this happened to me, maybe 100 years back, maybe 200 years back, but I here held on to the pain and to the resentment. And one day, I changed my costume. Entered into the womb of a mother. We don't know what the mother was going through those 9 months. Suppose she was holding to some resentment in her own life. Then I, the soul, came with resentment here, pain here, hurt here. And in those 9 months, my mother radiated to me pain, resentment, hurt, hatred. So what I was carrying here, अब इसमें कोई हमने गलत कर्मा किया क्या? Did we do any wrong karma in this? No. गलत किसने किया था? किसी और ने. हमने सिर्फ क्या किया था? हमने forgive नहीं किया था उस time. If I look at my karma, I will not say not forgiving is a wrong karma. But wrong only means any energy here which is not a happy energy, which is a painful energy which could be created because of the karma of other people. And then I left one costume and then I took another one and I'm holding hurt and resentment and pain. And then I come into a costume where my lifestyle is also not healthy, my present karma. And then suddenly I'm exposed to food which has a lot of chemicals. Sometimes just 5-6 factors are going to come together. And that's it. So we should never ever create this thought which says मैंने कुछ गलत किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा गलत हुआ. हमें रीजन ही नहीं पता है और हमें रीजन जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि important is not what was my past karma,
Important is what is my present karma. What is my present karma? I had a conversation with an astrologer and I said, ये जो आप पहले दिन जन्म पत्री बनाते हैं, on what basis does this get decided? And he said, based on the sanskars the soul has come with and the planetary influence on the sanskars of the soul. I said, but all our life we are holding that document as a reference document saying 20 पे ये होगा, 40 पे ये होगा, 50 पे ये होगा. What about all my karmas, good and some not so good, which I may have done in these 40, 50 years? Are they not supposed to influence this Janampatri? So he said, you know what? This Janampatri is based on the sanskars of the soul. He said, most people don't change their sanskar. And because they don't change their sanskar, Janampatri prediction will come right. Because it is based on influence of planet on what I carry here. I said, what if somebody changes their sanskar? He said, if somebody changes their sanskar, and I'm quoting him, he said, if somebody changes their sanskar, for them, this document is not valid. That's the power of the present. That's the power of the present. Past बहुत कमजोर है प्रेजेंट के सामने. लेकिन प्रेजेंट में ये सोच के कि मुझे क्या हुआ, क्यों हुआ, हम प्रेजेंट को भी क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं. पास्ट कुछ भी हुआ हो, अगर हमारा प्रेजेंट इस टाइम सिर्फ एक थॉट है ऑफ हीलिंग है, अभी जो हमने देखा, देखे हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स, then my present karma, which means my present right way of thinking, being, eating, drinking, exercising, all my right karmas will completely override my past karma. तो क्यों हुआ is a delete button. Important है अब क्या करना है. And अब क्या करना is not only while I'm going through the healing process, and अब क्या करना has nothing to do with cancer. अब क्या करना है just so that I am happy always. Dr. Pant ने कहा in the video, 1 in 8 by 2020 could have breast cancer. WHO says today, not in 2020, today, not even today, they said it in 2017, 1 in 4 has symptoms of depression. आपको क्या लगता है कौन ज्यादा दर्द देता है, डिप्रेशन या कैंसर? डिप्रेशन या कैंसर? हाँ जी, नो नहीं, नो, एक आया था दूसरे को हम आने देते हैं, है ना? एक तो आया था और दूसरे को हम आने देते हैं. अब हमें क्या करना है, एक आ गया है दूसरे को नहीं आने देना, which applies to any karmic account in our life. एक karmic account आया है, जैसे किसी का बिजनेस में नुकसान हो जाता है, it's one karmic account, financial. But if they get upset, they get depressed, they create the second karmic account. Because of that, if it starts affecting their health, they create the third karmic account. Because of that, they get irritable and are not good to people in their relationships, they create the fourth karmic account. आए कितने थे? आए कितने थे? एक. बाकी 3 कौन लाया? हम लाए. कब लाए? प्रेजेंट कर्मा. प्रेजेंट कर्मा. एंड यही अगर वो एक आया था, लेकिन हमारे प्रेजेंट कर्मा में हम पावरफुल होते तो बाकी 3 तो होते ही ना, लेकिन वो जो एक आया था वो भी चला जाता, because that's the power of my present karma. So let's start integrating some things into our daily lifestyle by which we can be happy always. This whole concept of cancer comes back. It's not applicable just to cancer. It is applicable to कोई भी और बीमारी. And why is that? Because बीमारी यहाँ नहीं होती है, बीमारी पहले यहाँ होती है. It's a clot here. It is something that I am holding here, by which I am radiating that negative, painful, hurtful, resentment, guilt, कोई भी vibration I am radiating to my body. Second,
the blockage gets manifested into something which is called as an energy body. Third, the blockage gets manifested into a physical body. We get it diagnosed when it is manifested on the third stage, physical body. Then we treat it also on the physical body. After that, once it is removed from my physical body, if I change something here, which means I clean my past hurt, I remove everything I'm holding on the screen of my mind, and I tell myself from today, happy always. Dunya kuch bhi kare. I'm going to be happy always. And I start working on a daily basis to clean things here. शरीर में से क्लॉट डॉक्टर ने निकाल दिया, यहाँ का क्लॉट कौन निकालेगा, यहाँ का कौन निकालेगा, हम निकालेंगे. And when I release everything which is not healthy from here, then there is nothing unhealthy radiating here. And if there's nothing unhealthy radiating from here to here, वो वापस नहीं आ सकता, वो वापस नहीं आ सकता. अब आपको दुनिया कहे कि कैंसर वापस आ जाता है, आपको वो लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आ सकता वापस, because I'm no more the same person. I have changed, finished. It cannot. Let's not hear, read and talk about people जिनको वो वापस आ गया. Let's listen, read and talk about people जिनको वो कभी वापस नहीं आया. It all depends on what we are feeling inside. Even when I create a thought, फिर से ना हो जाए, what's the message that I'm radiating here? फिर से ना हो जाए. So now again look at the mind sitting here on the other chair and धीरे से आपको बोलता है फिर से ना हो जाए. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Suppose that person sitting on the chair is your child, close family member. धीरे से आपको बोलता है फिर से ना हो जाए. What will you say? थोड़ा जोर से बोलो ना ऐसे. जो हो ही नहीं सकता. नहीं होगा. और क्या बोल सकते हैं? जो हो ही नहीं सकता. I am totally healthy and will always be healthy. And क्या बोल सकते हैं? Start giving a very positive message to yourself every day. It was a past karmic account. A past karmic account means past, and every day. And this is something I say to myself every day for all the small and big things which come in my life. It was a past karmic account. It's over, it's over, it's over. Never ever to come again. Every day, every day, every day. These are mantras of life. And when I keep repeating this line again and again and again in my meditation and in my prayer every day, that it was a past karmic account, never ever to come again, I am deleting that song which sings inside saying, "Phir se na ho jaye, phir se na ho jaye, phir se na ho jaye." So we have to override a particular song by recording a new song. तो खुद भी ऐसे गाने नहीं गाएंगे and किसी और को हमारे सामने बिल्कुल नहीं गाने देंगे, बिल्कुल नहीं गाने देंगे. And someone had written a very sweet question that it's over, I'm healed, people don't seem to forget it. होता है ऐसा कभी कभी. अब एक चीज करनी है. If I keep it on my mind, and this is to do with everything, I'll tell you a simple thing. This is my white sari, okay? Drinking a cup of tea, मैं चाय गिरा दूँ यहाँ पे अभी, इस पे एक दाग लग जाएगा, okay? If I am conscious of that stain and I create a thought, लोग क्या बोलेंगे? दाग लग गया. लोग क्या बोलेंगे? दाग लग गया. छुपाऊं कैसे? दाग लग गया. Stain on my dress, but that vibration is on my mind, and I keep sending it to people I meet. Invariably people are going to ask me, अरे दाग लग गया, आजो 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 हम धो देते हैं. एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखना. Have a stain on your dress and don't create a thought here. Just walk around, meet everybody. लोगों का ध्यान नहीं जाएगा इसके ऊपर क्योंकि आपने वो मैसेज उनको दिया ही नहीं. So it's important to delete that from our mind because past experiences 2-3 people must have spoken about it. ठीक है. Now let me create a thought every time before I meet people.
Nobody will talk to me today about it because I'm completely healed. Instead of thinking, अब जा रही हूँ फिर कोई ना कोई पूछेगा आज. It's two different ways of thinking. So if I create a thought, अब फिर कोई पूछेगा तो लोग ज़रूर पूछेंगे. And if I send a very strong message to people, none of you today are going to talk to me about it from here. See the percentage change. And in spite of you creating a thought, अगर फिर कोई बोलना शुरू कर देता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इग्नोर क्यों करेंगे? ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते. आई एम हील्ड. हाँ, और हाँ जी, हाँ जी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, कौन से कैंसर की बात कर रहे हो? मुझे कैंसर भी क्यों? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, वन थिंग. एनीथिंग एल्स? क्या कर सकते हैं? बोलो कुछ दाग अच्छे होते हैं. हाँ जी, कुछ दाग अच्छे होते हैं. हाँ, और ये जो इतने प्यार से और इतने खुश होकर यहाँ आंसर कर रहे हैं ना, बस इतने ही खुश होकर वहाँ आंसर करना है. बात तो हल्के में खत्म हो जाएगी. आपको पता है, छोटी सी प्रॉब्लम है. लोग ये समझते हैं कि अगर नहीं पूछा तो ये बुरा मान जाएंगे. हाँ, रियली. वो कहेंगे अगर मैंने इनको नहीं पूछा कि इनकी तबीयत कैसी है तो ये सोचेंगे पूछा भी नहीं कि तबीयत कैसी है, इसलिए लोग पूछते हैं कि तबीयत कैसी है. ऐसा होता है ना. तो कोई बात नहीं ना, लेट देम डू देयर कर्टसी. व्हाई आर टेकिंग इट सो पर्सनली? वैसे भी सबने एक दूसरे को पूछना है क्या हाल चाल है. मतलब बढ़िया, एकदम हाल चाल है. वो आपसे पूछें उससे पहले आप ही उनसे पूछ लो आपका क्या हाल चाल है. लेट्स मेक थिंग्स सिंपल. हल्का कर दें, लाइट कर दें, बुरा नहीं लगेगा. उन्होंने अपनी कर्टसी कॉन्वर्सेशन करनी है, उनको करने दो. टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि वो आपको बहुत सारी प्यार और दुआएं दे रहे हैं. उसको उस नज़रिए से देखोगे तो वो दुआएं तो अच्छी हैं. It's nothing to do with what people say to us. It's about how I think after they do what they do and they say to us. But for that, let me just start taking out a little time every day to strengthen this. And this is nothing to do with cancer. It's to do with each one of us. When we talk about lifestyle changes, when we talk about being healthy, it's about creating every right thought which will automatically radiate a right vibration. Let me just be happy always. So let's promise ourselves today, okay, every day, give half an hour to yourself. है time आधा घंटा ना? Yeah? Half an hour to exercise this. Nourish the mind, the soul, strengthen it so much that I will be happy every day, which comes with studying something very nice and positive first thing in the morning, and meditation and pranayama, yoga, whatever you feel best. But half an hour to nourish the mind so that it will take personal responsibility of creating the right thought, the right word, the right behavior. That means the right present karma, irrespective of what people, situations, or even what my past karma has to bring to me does not matter. My present karma is the one which creates my destiny, not the past karma. My present karma creates my destiny. Thank you so much. Sister Ji, as always, only you say things the way you say them. You have the gift. You always captivate everyone in how simple you cross such complex thoughts. And I was trying to make notes, and I will try and summarize what you said in a couple of minutes. So you asked us to change the narrative. We focus on the insignificant. We focus on the little. And we need to start thinking about focusing on what is significant. I think we press the save button too much. We have to start pressing the delete button a lot more than we press the save button. We worry about conserving energy globally, but we never think about conserving energy for ourselves. You talked about working on our sanskars. You talked about radiating positivity. You talked about
letting go. You talked about forgiveness. And that is really hard. It's very hard for us mortals to be able to do that. But as long as we don't move in that direction of forgiveness, we will never find happiness, because everyone has been hurt and will get hurt. It is really for us to be able to develop that ability. And it of course requires practice to be able to let go, to embrace forgiveness, because as Gandhiji had said, forgiveness is the attribute of the brave. The weak can never forgive. And more often than not, we perceive forgiveness as weakness. You talked about changing the stains, changing the thoughts, forgetting the record, and thereby changing the person. You talked about focusing on self-realization. Only I can hurt myself, therefore only I can heal myself. I can change nothing in this world. I cannot change anyone's behavior. I cannot expect anything from anyone. The only thing I have control over is my thoughts, my behavior, my life. And then of course, you ended by saying, happy always, because there is unlimited happiness in this world. Thank you so much, Sister Shivani.